आपको पता है कुत्ते बिल्ली आसमान से गिरते हैं। दुनिया में सिर्फ एक देश है जहां एक्चुअली कुत्ते बिल्ली आसमान से गिरते हैं। कुत्ते बिल्लियों की बारिश होती है, फिर वो चलते फिरते पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। आपको घर के बाहर कोई कुत्ता दिखे तो पूछना उसे उसके पास वीज़ा है कि नहीं। ऐसा सोचता था मैं बचपन में एक दो दिन के लिए। So what happened was, when I was a very young kid in class 2 or 3, there was this guy who came from the United States for something, and he was taking a session in our school, and among other things, while he was talking in English, of course, he said, "It's raining cats and dogs." कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। ये हुआ ना हिंदी ट्रांसलेशन तो। I was not familiar with what that phrase meant back then. ऐसे कैसे सकता है, आसमान से जानवर कैसे गिर सकते हैं? बट अल्टीमेटली माई कंक्लूजन वॉज, ठीक है डेवलप्ड कंट्री है, क्या पता गिरते हो। अमेरिका है ब्रो, अमेरिका। मे बी दैट इज़ द अमेरिकन ड्रीम। मैं एक ऐसे घर में जाके रहूँ जहाँ मैं सुबह अपने टेरेस का दरवाज़ा खोलूँ तो बस मेरे को कुत्ते बिल्ली पड़े हुए मिल जाए। वाह, व्हाट अ लाइफ। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट another tool that you can use to enhance your language. It's called idioms. Okay. So I'll give you 4-5 examples today of idioms जहाँ पे हम ये गलती करने का बहुत चांस होता है because we are not native speakers, because our first language is not English. So कई बार how we are communicating is, and at least to begin with how we are communicating is, when we are communicating in a foreign language, which is English is a foreign language to begin with, so we translate that into our mother tongue in our mind and then try and make sense of that statement. So it's raining cats and dogs, for example. Now literal translation of that phrase will not work. आप कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। बारिश कैसे हो सकती है कुत्ते बिल्लियों की कहीं पे भी? So it's raining cats and dogs means it's raining really heavily, for example, right? बट इंग्लिश कैन बी अ ट्रिकी लैंग्वेज एट टाइम्स। जैसे बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सी का प्रोनाउंसिएशन भी के आ रहा है, के का प्रोनाउंसिएशन भी के आ रहा है। वाई द फक डू वी हैव दीज टू डिफरेंट अल्फाबेट्स फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन केसेस, राइट? सो इट इज़ अ ट्रिकी लैंग्वेज, नो डाउट अबाउट इट। देर आर सर्टन रूल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो. So knowledge one, like I said in the other video yesterday, learning is a process. So knowledge of a concept is the first thing, and then you start applying it. Okay? So it's raining cats and dogs was one. There's another phrase, बाल्टी को लात मार दो। भाई मैं इतनी मेहनत से पानी भर के लाया हूँ तो बाल्टी को लात क्यों मार रहा है? कैसे तू बाल्टी को लात मार देगा? मैं तो जिंदा छोड़ूंगा क्या? But the point is, there is this English idiom which is kick the bucket. It means to die. So you can use this phrase. So for example, if somebody is dead, you can say that he kicked the bucket. But उसका मतलब ये नहीं कि वो बाल्टी पे लात मार रहा है। उसका मतलब ये कि ब्रो, राम नाम सत्य। ऐसे और भी बहुत सारे इडियम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका लिटरल ट्रांसलेशन आप करने लगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टांग तोड़ दो। किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, टांग तोड़ दो। अब ये तो इट मेक्स नो सेंस, राइट? वो बेचारा आदमी मेहनत कर रहा है, अपनी किसी तरह रोजी रोटी कमा रहा है, मैं उसकी टांग क्यों तोड़ दूँ? उसका इलाज कौन कराएगा? देयर इज दिस इंग्लिश इडियम कॉल्ड ब्रेक अ लेग, राइट? So this is used, ideally this is used to sort of wish someone luck. It is used to help them do well, motivate them. If someone says, I just broke a leg, for example, a stand-up comic comes back and says, and the audience says he broke a leg, that means he did a great show. But breaking a leg, Hindi literal translation is, टांग तोड़ दो. So that will make no sense, right? Let the cat out of the bag. पहले तो ये बता मेरे को, थैले के अंदर बिल्ली कर क्या रही थी? तो इंसान है कि खुद जानवर बन गया है? थैले में डाली कैसे तूने बिल्ली, राइट? बट लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग डजंट मीन लिटरली लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग. ओके, another idiom which you can use in your language as and when the context is right, and you can enhance your communication skills. Hit the sack, for example. बोरी को मारो, कट्टे को मारो. What does that even mean, right? What the idiom means, hit the sack, is go to sleep, right? I'm hitting the sack, that means I'm just dozing off now. But literal Hindi translation, of course, is very different from what the English message is behind that sentence. So the idea is for us to be able to understand
and use these idioms in our daily language. Of course, please go look out for some more idioms which have this very weird Hindi translation, which makes no sense to you. But of course, so two things. Number one, what we're not doing is, as much as possible, we are trying to understand the English language and the rules that are followed in the language. Number one, पे ही रुकते हैं अभी. Please try and do not translate English phrases into Hindi while you're communicating. Try and just translate them into the English language itself, if that is what you want to do. बट उसके लिए कॉन्टेक्स्ट समझना, उसके लिए इडियम्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एंड लाइक आई सेड इन द अदर वीडियो, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज इडियम्स इन योर लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशन गेट्स रियली इन्हांस्ड. आपका कम्युनिकेशन बहुत इन्हांस हो जाता है. लैंग्वेज हैज़ सच वंडरफुल टूल्स टू ब्यूटिफाई इट. So idioms is another one of our grammatical structural methods in which we can put them in a sentence. और बहुत ज़्यादा 4-5 sentences लिखने की जगह एक ही sentence में बात ख़त्म हो जाता है. So try this, give yourself a half an hour window, 45 minutes, see how you can go about it, and let us know if you have any other topics that you would want help on. We will end up creating videos on them. And of course, please follow our YouTube channel for more content. You'll find the link in the bio. Take care.